Dear children, welcome to my YouTube channel English with Kshama. Today we are going to learn invitations and their replies. This is in class 12th curriculum and I think this is a very important writing skill in which you can score 3 out of 3. So without wasting time, let us begin. Dear children, what is an invitation? They are generally printed cards through which we invite our guests on some auspicious occasions like wedding, birthday, anniversaries, housewarming, inauguration of shop, factory, etc. etc. Now आपने घर में देखे तो होंगे किस तरह से invitation cards आते हैं. So let us discuss that. They are of two types, formal and informal. So formal invitations, dear children, they are like formal letters. They can be printed on cards, जैसे कि आपके घरों में आते भी हैं और आप लोग भी कार्ड प्रिंट करके भेजते भी हैं. And they can be drafted in the form of a social letters. ये फर्दर डिवीजन है इनका कि फॉर्मल इनविटेशन भी दो तरह के होते हैं. एक होता है जिसमें हम बहुत लोगों को इनवाइट करते हैं, दैट इज मास इनवाइटी, लाइक वेडिंग सेरेमनीज, लाइक बर्थडेज, एनिवर्सरी. ये मास इनविटेशन के लिए होते हैं. ये प्रिंटेड होते हैं एंड दे डू नॉट इंक्लूड द नेम ऑफ एड्रेसी. एड्रेसी का मतलब है जिसको आपने इनवाइट किया है. Like you have invited a person, so you will not include the name of a person in the printed matter, and it will be meant for mass invitees because उनका जो फॉर्मेट है, जो स्टाइल है, वो एक कार्ड की तरह होगा. डियर चिल्ड्रन, एक होता है जब आप सिंगल इनवाइटी को बुलाते हैं, लाइक वीआईपी, टू प्रिसाइड ओवर एनी सोशल, कल्चरल और एजुकेशनल फंक्शन एनीवेयर. इट कैन बी इन योर स्कूल, इट कैन बी एनीवेयर. जब वो सिंगल इनवाइटी होता है, उस केस में आप जो फॉर्मल इनविटेशन लिखोगे, आइदर दैट कैन बी टाइप्ड और दैट कैन बी हैंड रिटन, और उस फॉर्मल इनविटेशन में जो गेस्ट है उसका नाम प्रोमिनेंटली अपीयर होता है, दैट वी वांट टू इनवाइट मिस्टर सो एंड सो टू प्रिसाइड ओवर दिस फंक्शन ऑफ आवर स्कूल या आवर सोसाइटी और एनीवेयर. फॉर्मल इनविटेशन जो कार्ड की फॉर्मेट में होता है या जो प्रिंटेड होता है, ना डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा. कार्ड की फॉर्मेट में हम जब करते हैं जब मास इनवाइट होता है, और हैंड रिटन या टाइप्ड हम उस केस में करते हैं जब हम सिंगल इनवाइटी को कोई इनविटेशन भेजते हैं एज अ वीआईपी टू प्रिसाइड ओवर एनी फंक्शन. इनकी जो लैंग्वेज है फॉर्मल होती है, प्लेजेंट होती है, कर्टियस होती है. एंड डियर चिल्ड्रन, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू कीप इन माइंड while drafting a formal invitation, that we have to use only third person pronoun. It cannot be like ki, I am inviting you to the wedding of my daughter. So dear children, without wasting time, let us discuss the format of formal invitation. And right in the beginning, the name of the host or the one who is issuing the invitation is written, and it begins with these many standard expression. You can find one another also, but then these are the standard expression by which we start our invitation, like request the pleasure of your company, solicit your gracious presence, cordially invites you, cordially request the honor of your presence, invite you to join, request the benign present. So you can choose any of these expressions to start your formal invitation. नाउ डियर चिल्ड्रन, फॉर्मेट में ही आपका पर्पस ऑफ इनविटेशन आता है कि आप किस ओकेजन के लिए अपने गेस्ट को बुला रहे हो. इफ इट इज अ मैरिज, इट इज इनॉग्रेशन, सेलिब्रेशन ऑफ एनी हिस्टोरिक डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड व्हाइल राइटिंग द पर्पस, यू आर सपोज टू मेंशन द डेट, वेन्यू एंड टाइम ऑफ द इवेंट एंड कंप्लीट एड्रेस ऑफ द होस्ट, आई मीन विद द टेलीफोन नंबर. These are very essential ingredients of any formal invitation. Now moving on to the sample. One sample, that is, your sister Nivedita is going to marry Akhilesh so and so Joshi. Your father, Mr. K.S. Bharadwaj, has planned to hold the wedding at Hotel Kunal, New Delhi. Now let us draft this formal invitation on behalf of Mrs. and Mr. K.S. Bharadwaj, inviting guests to the auspicious occasion. Now it's very clear, dear children, that since it is going to be a printed card for mass invitation, so we have to write like a card here. You have to put your invitation in a box in such kind of invitation, and you have to begin with the name of the host. और host कौन है यहाँ पे? Mrs. and Mr. K.S. Bharadwaj. And we have selected
one standard expression just to begin, that is, request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage of their daughter Nivedita with Akhilesh. And Akhilesh is son of Mr. and Mrs. Joshi of Nainital. Now after this, dear children, we have given the date, we have given the venue and also the time. And लास्ट में हम RSVP में हम अपने जो इनवाइट कर रहा है उसका एड्रेस और फोन नंबर, नेम, ये सब हम लिखते हैं. RSVP मीन्स होता है, इट्स अ फ्रेंच वर्ड डियर चिल्ड्रन, दैट मीन्स रिपोंडे सिल्वा प्लू. इसका इंग्लिश में मतलब होता है कि प्लीज एक्नॉलेज एंड रिप्लाई ऑन द गिवन एड्रेस एंड फोन नंबर, जस्ट टू कंफर्म योर प्रेजेंस और whether you are coming or not coming, you have to reply on the given address or you have to telephonically inform the person who has invited you. Now moving on to the next sample, that is Mr. Shamlal Sons are going to open a new general store. This is a kind of a commercial invitation, but then it will have a this formal drafting of the invitation. So inauguration hai, ceremony hai, that is fixed on Sunday, that is 19th October at 11 a.m. We have to write a formal invitation. Now this is again the name of the person who has drafted, or you can say who has invited the people, uska naam sabse pehle appear hoga. So that is Messrs. Shamlal and Sons announced the opening of Galaxy Novelties, a journal store in Gitanjali Enclave, Dwarka, Delhi. एंड डियर चिल्ड्रन, इसके बाद हमने डेट भी दिया है, डे भी दिया है, टाइम भी दिया है, एंड फाइनली वी हैव रिटन टू ऑल दैट दे आर कॉर्डियली इनवाइटेड. लैंग्वेज इसमें भी फॉर्मल है और इसमें भी वो सारी डिटेल्स हैं जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में करी थी. द ओनली डिफरेंस इज दैट इट इज नॉट मेंट फॉर एनी वेडिंग पर्पज, इट इज मेंट फॉर अनाउंसिंग एन इनॉग्रेशन of a shop or whatever journal store. Fine. So, and we have given one last line, avail inaugural discount of 10% on all goods. This is just to attract the people. RSVP इसमें भी दिया है और इसमें हमने अपनी उसका नाम दे दिया है जो हमारी शोरूम का नाम है, Galaxy Novelties, and phone number. So in case of any query, in case of any acknowledgement, you will be contacting these people. Now moving on to the next sample, you are a student of Newton Public School, Nagpur, and the school is going to organize the annual function on Saturday, the 15th November. The HRD minister, Mr. Joshi, has consented to be the chief guest. Now class, this is meant for a single invitee, but then it is a formal invitation. The previous ones were for the mass invitee, and this particular one is for only single invitee who is going to preside over the function, annual function. Now see, we have to write, the principal, staff and students of Newton Public School, Nagpur solicits the presence of your company on the auspicious occasion of the annual function of their school. And again class, इसमें हमने time दिया है, date दिया है और उसमें हमने ये लिखा है कि so and so. इसमें जो नाम है ये देखिए, single invitee में यही मैं बता रही थी कि ये जो नाम है इसमें गेस्ट का वो प्रोमिनेंटली अपीयर होता है और इसमें हुआ है डॉक्टर MM जोशी, HRD मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. He is going to be the chief guest who will give away the prizes to the students. And RSVP में हमने principal, Newton Public School and phone number. So this is how you will write for a single invitee. इसको भी आप बॉक्स में बंद कर सकते हैं. And let us see the format in which we can format of a letter in which we can draft a formal invitation. ये बिल्कुल वैसा ही है डियर चिल्ड्रन, जैसे कि आपके लेटर का फॉर्मेट होता है वैसा ही इसका भी फॉर्मेट है, बट दिस इज जस्ट अनदर फॉर्मेट. नाउ सी, एपेक्स ओरिएंटेशन, करोल बाग, ये सेंडर्स एड्रेस है, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, और इसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं बिकॉज इसमें जब हम फॉलो कर रहे हैं फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट तो हम सब्जेक्ट भी लिखेंगे एंड ऑब्वियसली सैल्यूटेशन भी लिखेंगे, दैट इज सर और मैडम. उसकी लैंग्वेज हम, एंड वी विल कंक्लूड दिस लेटर, I mean to say this format of a letter in which we are in this format of a letter in which we are inviting one single guest to Apex Orientation and Karol Bagh. इसमें जब हम लिखेंगे तो हम इसमें छोटा सा एक अपना इनविटेशन ही ड्राफ्ट करेंगे. इट इज नॉट लाइक कि आपको एक फॉर्मल लंबा चौड़ा लेटर लिखना है, वो आपको इनविटेशन ही लिखना है, एंड विच इज गोइंग टू बी अ 3-4 लाइन
letter. Now इसमें भी आपने leading or apex orientation, leading name in postal coaching for competitive exam. We regard your school as one of the prestigious institution. So this is actually written to the principal, and the apex orientation जो करौल बाग में है उसने कुछ बच्चों को बुलाया है to attend their career counseling session for IIT and Z. So this is how it will be drafted. जब आप इसको लेटर की फॉर्मेट में करोगे तो ये इस तरह से ड्राफ्ट होगा. Then let us do some sample. That Sachin Bansal, the head boy of Springdale's Public School, and your school is holding an inter-school T20 cricket championship. Let us see how you will write a formal invitation in the form of a formal letter. Now, स्कूल का नाम सबसे पहले आएगा, then date, and obviously जिसको आप बुला रहे हो as a judge इनॉग्रेशन करने या जज एज ए चीफ गेस्ट विच एवर, उसका आप नाम यहाँ पे लिखोगे एंड एड्रेस ऑल्सो. बट देन सब्जेक्ट लिखना जरूरी है इसमें, इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में. और इस स्टाइल ऑफ राइटिंग में आप जब सब्जेक्ट लिखोगे तो यू विल फॉलो द थीम ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन का थीम क्या था कि हम इनॉग्रेशन क्रिकेट चैंपियनशिप का कर रहे हैं और हम बिशन सिंह बेदी को बुला रहे हैं. Our school is holding an inter-school T20 championship and your presence is our like it is going to inspire us, and that is how we request you to inaugurate the championship. Short, sweet, but then we have mentioned the purpose, we have mentioned the date, we have mentioned the time also. Dear children, very very important things to be kept in mind. And last में हमने लिखा है kindly confirm your availability by 30th September. That means either you can decline or you can accept our invitation. So this is how you are supposed to write a formal invitation to a single invitee who is going to preside over some function or not. Last की line आपको ये जरूर लिखनी है कि kindly confirm your availability by 30th September. Now practice these questions. This is for your practice. Thomas Public School, Meerut is organizing inter-school one-act play competition. Draft an invitation to famous playwright. So this is going to be a formal invitation to a single invitee. Fine. So you can follow the format of a formal letter and draft the invitation. Second one, Spick and Span are opening a new showroom of space, saving furniture at Nehru Place. So inauguration is to be held. Write a formal invitation on their behalf, inviting their friends and relatives to the function. Now this is opening up a new showroom है, तो उसमें आप कार्ड के स्टाइल में लिख सकते हैं. Third one is on behalf of Mrs. and Mr. Mehra, draft a printed invitation card for the marriage of their daughter. And again children, this is for the mass invitee, so it is going to be like a printed card. Now let us discuss about informal invitations. That can be written to your friends, your family, your relatives, your acquaintances. इसमें आप first person और second person pronoun का use कर सकते हो. It is not meant for third person pronoun. आपकी personal feeling इसमें express की जा सकती हैं. राइटर का जो डेट है वो दिया जाता है यूजुअल प्लेस पे जहां होता है हमारे लेटर में. और सैल्यूटेशन जो सर और मैडम था फॉर्मल इनविटेशन में, वो डियर और नेम आ जाता है बच्चे का. डेट ऑफ राइटिंग तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर राइटिंग तो देना ही पड़ेगा. द स्टाइल एंड टोन आर रिलैक्स्ड. डिफरेंट टेंसेस कैन बी यूज्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसमें जो आता है वो योर्स सिंसियरली आ जाता है. So let us practice one this. Smith Menon has come out successfully in the medical entrance exam and he wants to throw a party to his friend. Let us draft the informal invitation. Now see, the address has been given at its usual place, date has been given and dear friend. Now see dear children, इसमें personal जो feeling है वो express की गई है. Personal pronoun use किया गया है, that is first person pronoun I उसने use किया है. I have the pleasure to inform you that I have arranged a small get together at my residence on Sunday. Dear children, इसमें भी date है, day है, venue है, time है and purpose है. Purpose क्या है? To celebrate my selection in the medical entrance exam. So this is just an essential thing कि आप उसमें date, venue, time और purpose लिखिए and just mind that whether you are writing in third person pronoun or first person pronoun. If it is formal invitation, obviously you are supposed to be formal and use third person pronouns only. And if it is informal, you can use first person pronoun. You can write your personal feelings as well. And but then जो
other essential ingredients say like date, venue, time will not be missed out. Mind it. It has to be given and you will be given marks for that. One more example. You are Leena Sen. The wedding of your elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May. Write the informal invitation to your friend Winnie requesting her to attend. So this is how the address has been given. And dear Winnie, you will be pleased to know that wedding of my elder sister Reena Sen is going to be held on 15th May at Hotel Lakeview, Udaipur. The whole family will move there in the morning. I invite you to join the lunch in the hotel on the 15th. The wedding ceremony will take place at 8 in the evening. I do hope you will join us. Now dear children, इस जैसे कि हमने formal invitation में लिखा था, kindly confirm your acceptance, and therein we actually intended to convey to the invitee that कि आपको आना है या नहीं आना. If you want to refuse, if you want to accept, please do inform us. Now इसमें हमने I do hope you will join us on auspicious occasion. इसमें भी हमने अपनी friend Winnie को लिख दिया है कि maybe you are going to join us. It is her choice. अगर वो join करेगी तो भी बताएगी, वो नहीं join करेगी तो भी बताएगी, because last line हमारी ये indicate करती है कि please let us know about your acceptance or your refusal. Now these are the practice question class, and kindly do them, because then it will confirm that you have learned the topic very well. So one is Ankit Verma, your friend from Malaysia, is staying in a hostel. Invite him to join Diwali celebration. This is going to be informal. Second is also informal, and the third one is also informal invitation. Now dear children, thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe, and wait for my next video in which I am going to tell you how to write the replies to these invitations. So wait and watch.